Everyone, welcome to our channel. My name is Nisha Iyer, and today I will be discussing a PowerPoint case as a part of the 20 video series on CPT module that we are conducting on our channel. This is a screenshot of how the output should look like, and these are the instructions that are given with respect to the slide. आई थिंक दिस ईयर आपका थोड़ा सा अलग रहेगा प्रोसेस. यूजुअली अब तक ऐसा देखा जा रहा था दैट द स्टूडेंट्स वर बीइंग गिवन अ प्रिंट आउट एंड इन द प्रिंट आउट देयर वाज द photo of the slide and the instructions, but due to COVID probably they will be already having a file in the computer where there will be the snips of the output and instructions, and you need to make the slide and of course the Excel accordingly. This is a very good or quite an interesting slide or example for the fact that there'll be a lot of concepts that will be clear, like regarding bullets, sub bullets, footer and your border, lot of things. तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. एक मिनट. Please take the screenshot of this because I won't be coming back again and again, and we can save a bit of time. We can keep our video short, and please take a screenshot of the instructions as well. I'll just maximize this. Please take a screenshot of the instructions, snap of the instructions, and keep it handy for future reference. So let's get started without much. Let's jump to our slide. So I have PowerPoint already open in my desktop. Now if you see, there is a variation in the aspect ratio of the slide which is open in front of me and the screenshot. We need to make this 4:3. This is in landscape mode, which is 16:9. So let's make it default mode, which is 4:3. So I'll click on the design tab. I'll go to slide size and I'll click on standard. So if you see, the size shrinks a bit. So this is what we want. Next we go to the layout. अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने layout जो दिया हुआ है, this is what is asked. This is same as what is asked. By layout I mean there are multiple layouts. If you go to the home tab and you click on layouts, there are multiple layouts you can observe, like something like a title slide, title and content. Mostly we will be using only these two layouts, and here they have asked us to use the default layout, that is the title layout itself. अगर यहाँ पे टाइटल लेआउट बोला है और आपका कोई और लेआउट दिखा रहा है या फिर टाइटल लेआउट नहीं बोला है, तो आप यहाँ पे लेआउट पे जाना and then you can choose whatever you want. So for me this is what I require. I'll keep it the same. ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हम पहले we'll be typing all the material, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व हुआ है प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट्स हैव फेस डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, द एक्सरसाइज. व्हाई? दे फाउंड द टेक्स्ट टू बी वेरी लेंथी and they were doing the formatting alongside the typing, due to which they lost a bit of the time and उसके वजह से उनका कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ सर्टेन फैक्टर्स रह गए थे उनके. हमारा यहाँ पे मोटिव यही रहेगा कि हम कंप्लीट कर ले, एज वेल एज हमें फॉर्मेटिंग भी करना है, उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप साथ ही साथ करोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टाइपिंग. मैं टाइप कर लेती हूँ, आप एक बार चेक करते रहना आपके स्क्रीनशॉट के साथ. हाउस बिल्डिंग अलाउंस HBA, ये हो गया. अभी हम बुलेट स्टार्ट करते हैं. अगर आप देखोगे, देखिए कोई चिंता मत कीजिए, ये वैसे दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं. हम इसको रिसाइज बाद में कर लेंगे. इसका फॉन्ट ज़्यादा है, 60 है, हमको 44 करना है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर भी लेके चले जाते हैं. ठीक है,
क्योंकि हमको थोड़ा इसका भी मटेरियल जो है कवर करना है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ मैं। अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करना है, शिफ्ट को प्रेस करके आप साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल एल दे देती हूँ। कंट्रोल एल इज द शॉर्टकट की फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड था। इसके पहले अगर आप देखो कि ये सबटाइटल में आपका सेंट्रल अलाइनमेंट है, तो ये हमने लेफ्ट अलाइन कर दिया। अभी हम बुलेट स्टार्ट करते हैं। बुलेट जो है ट्राइंगुलर बुलेट है, बुलेट दे देते हैं एंड वील टाइप द कंटेंट। नाउ इफ यू सी द सब बुलेट स्टार्ट, तो सब बुलेट स्टार्ट करना तो आपको पता ही होगा, यू हैव टू प्रेस द टैब की। बट अब सब बुलेट में भी द टाइप इज नॉट सेम एज the master, the parent bullet. The parent bullet is a triangle. The child bullet is a square, is a black square. So you need to go to the bullets, choose the black square, and let's continue the typing. Okay. Now if I'm pressing enter, I am getting the black select, but I want to revert to the parent bullets. So I'll press shift tab and enter. If you see, there is a line gap. But now also I'm getting the black square. I need to get to the triangular bullet. So I'll do the same. I'll go and select the triangular bullet. Okay. Okay. So we have typed the content. Let's quickly do the formatting changes. We need to keep the font size of the title as 44. See, now it fit in a single line. That's why I told you to have certain patience, and we need to keep it as Calibri body. It is bold and underlined. I'll take it a bit up. And you can also enable guides to ensure that your components such as text box and everything is properly aligned. So this is properly aligned. Now comes the part of the subtext. So if you see, you need to increase the font as well as you need to change the font. So this is you need to make it 28 and the subtext should be 24 and this is Rockwell. Okay, so the main text, the headings, the recommended ceiling and this thing is in 28 and your sub bulleted points are in 24. So select the sub bulleted points and decrease the font. So we have made it 24. Now let's try to make it as aligned as given in the output. So the least part, if you see, the least part is down. I'll try to decrease the size. 5 years of to await. Okay, so this is exactly what is asked. I'll try to align it. So this is aligned as well. If you see, there is a red line that is coinciding with this grid line. Now I need to change the gap between the bullet and the text. You see, there is a bit of more gap. So I go to ruler. If you see, there are two components in a ruler.
in the right side. See, the left side would be the same because we are not changing the position of the bullet. We are changing the position of the text. तो ये text को change करने के लिए यहाँ पे दो components दिख रहे होंगे, एक rectangular component और एक triangular component. अगर आप rectangular component को drag करोगे तो आपका bullet और टेक्स्ट दोनों ड्रैग होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रायंगुलर को ड्रैग करोगे तो सिर्फ जो टेक्स्ट है उसको वो शिफ्ट करेगा. सो लेट्स शिफ्ट इट अ बिट, 1.5 कर देते हैं. अब ये अगर आपने शिफ्ट किया तो आपको ये भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको बुलेट के साथ आपको शिफ्ट करना है, बिकॉज ये बुलेट थोड़ा आपको आउट ऑफ अलाइनमेंट दिख रहा है. ये बुलेट शुड बी बिलो द आर. तो मैं ये रेक्टेंगल को क्लिक करूंगी एंड आई शिफ्ट इट, तो ये अभी अलाइनमेंट में आ गया. सिमिलरली इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा आपको 1.5 में, तो ये सिर्फ आप ट्रायंगल कंपोनेंट को मूव करोगे, नहीं तो बुलेट भी मूव हो जाएगा. ठीक है, दिस इज डन. हमारा सब हो गया है. अभी हमको वी नीड टू गिव द बॉर्डर. There are two ways of giving a border. Either you give the border directly through the text box or you insert a box. You can insert a rectangle from here और उसका आप formatting कर सकते हैं, whichever suits. तो ये आपने कर लिया. यहाँ पे फॉर्मेट शेप कर लेंगे, लाइन ऑप्शंस, सॉलिड लाइन, कलर ब्लैक ही है एंड मे बी विड्थ को थोड़ा बाद में देखते हैं. कंपाउंड टाइप में आपको जो बोल रही थी, जो आउटर है दैट वाज थिन, इनर वाज थिक, सो ये हम यूज करेंगे. ठीक है, एंड थिकनेस हम बढ़ा देते हैं, मे बी 6 पॉइंट बना देते हैं. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन. इनर इज थिक एंड आउटर इज थिन. ओके, जस्ट सेव इट. सेव आपको कैसे करना है, कंप्यूटर आप एक काम कर सकते हैं, पहले ही आप सेव कर ले, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ इश्यूज हो सकते हैं. तो डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी सेव कर रहे SSC_ रोल नंबर. ठीक है, सेव भी कर लिया हमने. बस अभी फुटर लगाना है. फुटर लगाना तो आपको आता है. इंसर्ट हेडर एंड फुटर, डेट एंड टाइम दे दीजिएगा. अभी डेट एंड टाइम में जो डेट का फॉर्मेट है दैट शुड बी सिमिलर टू व्हाट इज गिवन इन द स्लाइड. स्लाइड में मंथ, डेट, कॉमा, ईयर है. यहाँ पे देख लेते हैं ये फॉर्मेट है क्या. यहाँ पे मुझे फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, लैंग्वेज चेंज कर दूंगी, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फॉर्मेट मुझे मिल गया. ठीक है, स्लाइड नंबर क्योंकि राइट अलाइनमेंट में हमें नाम देना है एंड फुटर में आपको रोल नंबर देना है मिडिल में. तो रोल नंबर, ठीक है, आपका जो आपने फाइल नेम में दिया है, टेम्पररी मतलब टेम्पररी में प्रैक्टिस करने के लिए, टेम्पररीली प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन यूज दिस एनी आर्बिट्ररी रोल नंबर. और यहाँ पे आपको नेम देना पड़ेगा. डन विद दिस. अभी आखिरी चीज है, इसका साइज बड़ा करना है और इसको टाइम्स न्यू रोमन बनाना है. तो टाइम्स एंड 14. ठीक है, सेव कर लीजिएगा. और ये आपका आउटपुट. आप प्रेजेंटर मोड में जाओगे, यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं है, मेक इट नहीं हो रहा. तो यहाँ पे आप प्रिंट में भी जाके देख सकते हैं. दिस इज हाउ योर आउटपुट विल लुक लाइक. थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है आउटपुट अलग है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है ना, थोड़ा सा यू आर एबल टू सी अ गैप. यहाँ पे भी आपको नीचे में थोड़ा गैप है, वहाँ पे गैप कम है. वो इसलिए क्योंकि मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है. तो एक्चुअल में भी आपको ये डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप वो वाला यूज़ करोगे तो वो और वाइट दिखेगा आपको. तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा. सेव कर लीजिएगा. आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो एक बार टेक्स्ट चेक कर लेना कुछ मिस्टेक है क्या. बाकी तो सही लग रहा है हमें. सो दैट वाज अबाउट इट गाइस. अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा. थैंक यू.